So for capacitors in parallel, we have C equivalent as C1 plus C2 plus C3. And capacitors in series, we have 1 by C equivalent as 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Okay, let us solve some questions. Let us find the equivalent capacitance for this case. The question is find equivalent capacitance between terminals A and B. Apura, why are you scratching your head? अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ. आज बहुत ज्यादा क्लासेस हुई क्या? ओके. नहीं, घर में बोर हो रहे हैं. घर में बोर हो रहे हैं. ये इश्यू तो है. Okay, find C equivalent. I hope कि offline classes दोबारा start हो. Yes, of course, after Corona. We have more fun in offline classes. Online में थोड़ा ज़्यादा professional होना पड़ता है. अभी questions back to back आते रहेंगे क्योंकि you have to keep solving and noting it down. Solve one and then note down other. मेरे पास सिर्फ माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर्स ही है. So I'm just writing the capacitance as in microfarads. सर फिफ्थ वाले में वो 1 माइक्रोफैरेड है ना सब. हाँ हाँ, इधर वाले सारे 1 माइक्रोफैराड है. सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना, सॉल्व भी करना है. सर 8 और 9 में वो क्या ऊपर. ये मैंने वायर जो ज्वाइन कर दिया यहाँ से और यहाँ तक. वायर ही है वो, कंडक्टर है. वी हैव ज्वाइंड इट. सर 8 और 9 को छोड़ के सब कर लिया. ओके गुड. 10 भी दे ही देता है. क्वेश्चन नंबर 1 जैसे जैसे हो गया, जस्ट रेज योर हैंड. क्वेश्चन नंबर 1, रेज योर हैंड. ओके. Nihal, what's the answer? 6. 6 microfarad. Nihal, what's the answer for the second one? So 0.5. 0.5. बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन किया होगा, बट 0.5 तो नहीं आना चाहिए. या ऋषित? 2 और 18.
2 ही होगा. Yes. So it's 2, right? Yeah, it's 2. Invert नहीं करना है उसको, मतलब you have to take the reciprocal also. Nupur, what's the answer for the third one? 6 plus 3, 9. Is that correct? 9. 9. No, they are in series. For series, the formula is this one. 1 by C1 plus 1 by C2 plus. Okay, solve it quickly. Tell me the answer. इसमें ध्यान रखना होगा. Resistor नहीं है ये. So 0.5. 0.5. No, you had to take the in reciprocal again. You have found out 1 by C equivalent. Now see the formula here. The formula is you're finding 1 by C equivalent. So you have to invert it to get the right answer. Tell me the right answer. Into 10 raised to minus 1. How much? 5 into 10 raised to minus 1. 5. Okay, let's see, I'm solving here. The formula is 1 by C equivalent equals to 1 by 6 plus 1 by 3. So that you must have gotten as 1 by 2. Okay, so 1 by C equivalent is 1 by 2. That means C equivalent is 2 now. Yes. Okay. Okay, Apurav, the answer for 4 is 6 plus 3 plus 2. That is very simple, just 11 microfarad, right? No. Okay, what's the answer? 6 by 5 microfarad. 6 by 5. Rishit, what's the answer? 1. 1. 1 correct Yes, लग sir. रहा है. 1 correct लग रहा है. पूरा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया. सी 6 1 by 6 plus 1 by 3 plus 1 by 2 कितना आ रहा है? हाँ, उसको 5 लिख. 5. अच्छा, this will be 1 by 6 plus 1 by 3. निहार, ये वाला करेक्ट आया था? Yes, sir. Okay, okay. क्वेश्चन नंबर 5. निहार सॉल्व हो गया? हाँ सर. सर कितना आ क्वेश्चन रहा नंबर 5 का आंसर मुझे 1 आ रहा है. है? 1 is correct. क्वेश्चन नंबर 6. ये दो पैरेलल में या सीरीज में है, करेक्ट है क्या ऋषित? देन सीरीज. तीनों सीरीज में. ओके, अच्छा, सीरीज की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंड टू एंड कनेक्शन होता है. एक कनेक्शन एंड होता है तो सेकंड कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो इक्विवेलेंट इज C by 3. Nupur, what's the answer for this? Question number 7. So I didn't do it. Okay. Okay, let us solve this together. Let us solve this together. So इसको solve करने के लिए I will just find out कि equivalent कैसा है, series है या parallel है. ठीक है. So I will do one thing. Look at the screen. यहाँ पे I will take out this A. मैं इसको A को उठा के बाहर रख दे रहे हैं. Okay, I'll just pull it out and keep it here. So it will look like this to me. A और ये वाला कैपेसिटर भी बाहर आ गया और बाकी ये दोनों कनेक्टेड है टर्मिनल से.
टर्मिनल बी से। अगर इस पॉइंट को मैं लिखना चाहूँ तो सी लिख सकता हूँ, सी नहीं लिखता, सी अवॉइड करते हैं, लेट अस राइट इट एज डी। ये पॉइंट डी हो गया। सो ए और डी को पिक करके मैंने ऑपोजिट साइड रख दिया, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में आ गए एंड ये उसके सीरीज में। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक और स्टेप लिख सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू विल बी हाउ मच, इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू विल बी 2C. 2C. Nice one. And equivalent of these two will be solve it. 2 by 3C. 2 by 3C. Product by sum wala na? That is one way to do it quickly. Okay, so for this it is 2C by 3. Apura, what about question number 8? कितना आंसर आ रहा है 8 का? नहीं, क्या नहीं आया? 8 नहीं आया। और किसी का 8 था? रिशित? C. C. Surely but try here. Try किया है। Okay, tell me the logic behind it. The first two are in series and which are in parallel with the next two kind of. अच्छा, सीरीज में तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है। सी, मैं एंड टू एंड जा रहा हूँ बट यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, 2 ब्रांचिंग हो गई, तो सीरीज में तो नहीं है। निहार, व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज? So I'm yet to attempt it. Just give me 2 minutes. ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 9 किसी ने सॉल्व किया? ओके, टेक योर टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सर 10th वाला है 10th वाला कितना आ रहा है? सी। सी। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है क्या 10th स्टैंडर्ड में? क्या ऋषित? सर? Pardon? व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, 11th में नहीं था। हाँ, 10th में नहीं था, 11th में तो नहीं होगा। ओके, अच्छा, see, I'm solving question number 8. Solving question number 8. Neha, do you have a question? You're raising hand. Yep, पुराना वाला ही है। Okay. Okay, see, इसमें first thing is that let us see this. ये वाला point A है. This point is A. Means at each and every point जहां भी ये वायर कनेक्ट हो रहा है वहां पे पोटेंशियल ए ही होगा। मींस दिस पॉइंट इज आल्सो ए। if this point का potential is A, then this point also has the potential A. Okay, so if this point is A, this point is also A, because wire में potential drop नहीं होता, it's a conductor. If I talk about this wire, if this point is B, this point is also B, and this point is also B. So there is a shortcut. पहले shortcut वाले मेथड से करते हैं। So A और B काउंट करते हैं। A और B के बीच ये फर्स्ट कैपेसिटर हो गया। So this is फर्स्ट कैपेसिटर A और B के बीच। देन सी यहाँ पे A और B के बीच अगेन सेकंड कैपेसिटर आ गया। ओके, एंड देन अगेन A और B के बीच एक और कैपेसिटर आ गया, थर्ड कैपेसिटर। सो combined together, these three are in parallel. So I can write C equivalent is equal to 3C. Okay, logically बहुत strong नहीं लग रहा होगा because ये सारे concepts will be studying in current electricity. But okay, let me try another way, and
still ऑफलाइन क्लास में थोड़ा ऑनलाइन क्लास थोड़ा मुश्किल है विजुअलाइज कराना, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ट्विस्ट दिस, इसको रिवर्ट करते हैं, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं सर्किट से. सो वॉच क्लोजली हाउ आई एम डूइंग दिस. सो मैं ए को इधर मूव कर रहा हूँ और बी को नीचे मूव कर रहा हूँ. वॉच क्लोजली, है ना, वॉच वेरी केयरफुली, अदरवाइज मिस हो जाएगा. सो सी वाला तो मैंने ऐसे ही रखा है, बी पॉइंट नीचे आ गया, मींस ये पहला वाला कैपेसिटर, आई विल नेम देम एज 1 2 3. तो फर्स्ट कैपेसिटर थोड़ा सा नीचे आया जब मैंने पॉइंट बी को पुल किया, और ये सेकेंड कैपेसिटर है. सेकेंड कैपेसिटर के एंड में लेट मी राइट दिस पॉइंट एज, इसको बी ए नहीं दिखता है, इसको सी और डी दिख देता है. सी यूज नहीं करते यहाँ पे, लेट अस से पी और क्यू लिख देते हैं. दिस इज पी, दिस इज क्यू. तो पॉइंट पी को मैंने नीचे पुल किया है, सो दिस इज माय पॉइंट पी. सो यहां से पॉइंट पी को नीचे पुल किया और ये कनेक्ट हो जाता है बी, बी से कनेक्ट हो जाता है. ओके, पी और बी में डायरेक्ट कनेक्शन है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, देयर इज जस्ट वायर. सो पी और बी में डायरेक्ट कनेक्शन है. देन सी, पी और क्यू के बीच कैपेसिटर सेकेंड है. पी एंड क्यू हैज कैपेसिटर 2 in between. Is that okay? Then Q और B के बीच थर्ड कैपेसिटर है. This is a third capacitor. और A और Q डायरेक्टली कनेक्टेड है. थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इतना तो समझ में आ रहा होगा. ओके ओके, अभी थोड़ा और पुल करते हैं इसको. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू, Q को मैं इधर पुल कर रहा हूँ और P को इधर पुल कर रहे हैं. Q is pulled on this side, P is pulled on this side. इतना पुल कर रहे हैं कि Q और A एक ही साथ आ जा रहे हैं. This is your point Q. And Q and B के बीच एक कैपेसिटर है, थर्ड वाला कैपेसिटर. This is a third capacitor between point Q and B. Okay, Q, then P point I am pulling towards B. So P point तो यहाँ पे आ गया. And between Q and P we have second capacitor, that is capacitor number 2. Okay, and if you pull point P here, then A और point B के बीच there is another capacitor, capacitor 3, no, capacitor 1. So can I say that these three are in parallel? Right? These three are in parallel. So इसको थोड़ा visualize करना होगा, but some of the students they are smart, वो ये वाला याद कर लेंगे and they will just write कि हाँ तीनों parallel में है तो just write 3C. That is also smart, but if you know the mechanism that would be better. So this was one way जो हम electric current में पढ़ेंगे और current electricity वाले chapter में. And this pulling, this is all just mental ability. You just pull it from here. You know that point P is like this. You, after the class, try doing it to yourself without seeing the solution, if you're able to get this. So equivalent capacitance is 3C. Any questions? Sir, could you explain the second diagram once again? Okay, see what I'm doing here? I'm pulling Q over this side towards A. When I'm pulling Q towards A, QB will be extended. QB will be extended, and this is capacitor 3 between Q and B. And I'm pulling P towards B. This is just a wire, so it doesn't affect anything. Pulling P towards B, I have one capacitor between Q and B, Q and P. So this is between Q and P. Then between A and P, we have
our first capacitor. That means these three are in parallel. Okay. Question number 9. Now, anybody want to attempt and tell me the answer? Okay, anybody thinks that all three are in parallel? Okay, anybody thinks that all three are in series? Yes. Okay, Rishit thinks that all three are in series. दिखने में तो लग रहा है, but I don't know. Anybody thinks that ये question solve ही नहीं करना चाहिए? बहुत बोर हो रहे हैं हम, बहुत फिजिक्स पढ़ लिया आज. Let's get away from here. Okay, just kidding. See, सीरीज में है क्या? सीरीज नहीं है ये. सीरीज में तब होता अगर ब्रांचिंग नहीं होती. यहाँ पे ब्रांचिंग हो जा रही है. जैसे सीधे जा रहा था, यहाँ पे 2 ब्रांचेस निकल गए, यहाँ पे 2 ब्रांचेस निकल गए. तो सीरीज में होने के लिए 9 का सी आ रहा है 9 का सी आ normally. रहा है. कैसे आ रहे? वो उधर ए लिया ना, वो सी का राइट साइड. इस वाले ये ए ले लिया, हाँ, और वो वाला बी ले लिया. वो वाला बी ले लिया, फिर हाँ, तो बस वो बीच का. और ये वाला वो शॉर्ट सर्किट हो गया. लॉजिक करेक्ट है. अगर ये पॉइंट ए है, अगर सेम ही कनेक्शन से बैटरी की एक ही साइड से कनेक्टेड है, दैट मीन शॉर्ट सर्किट हो गया. राइट. सो कोई भी चार्ज स्टोर नहीं करेगा. ये भी कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा, और ये भी बी है तो ये भी कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा. सो ओनली यही वाला कैपेसिटर रह गया जो दैट कैन चार्ज, दैट कैन स्टोर चार्ज. सो सी इक्विवेलेंट इज जस्ट सी. दिस इज शॉर्ट सर्किटेड. Short circuited means both ends are at same potential. This is also short circuit. Okay. Any questions? तो मतलब एग्जैक्टली फिर कैसे करना होता? यही तरीका, यही मेथड है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं कर सकते, then you cannot make it an equivalent capacitor. Equivalent. This is not even a part of circuit. Okay, next वाला solve करने के लिए we should really study electric current, but I will tell you a shortcut. इस arrangement को हम बोलते हैं Wheatstone bridge. This arrangement. This will be satisfying Wheatstone bridge condition. Wheatstone bridge condition when C1 C3 is equal to C4. जब C1 C3 C2 C4 के इक्वल हो जाएगा, सो पॉइंट P और पॉइंट Q पे पोटेंशियल सेम होता है. So if C1 C3 equals to C2 C4, then potential at point P is equal to potential at point Q. For now just memorize it. Current electricity हम properly पढ़ेंगे इसको. And when this happens, तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट, और यू कैन जस्ट omit दिस आउट, इसको गायब कर दिया. एंड यू सी C1 C2 सीरीज में, C4 C3 सीरीज में, एंड दोनों का इक्विवेलेंट इज इन पैरेलल. एंड वी कैन फाइंड C equivalent for this circuit very easily.
Okay, so this, if you remember, you can solve this question. So remember this, memorize this as a concept. We'll be deriving this properly in current electricity, but apply this concept to find C equivalent here. You have to verify कि ये वाला condition fulfill हो रहा है first, and then only you can solve question number 10. What is the value of C equivalent? C. C is the correct answer. Okay, let us continue with some theory part, then we'll come back to numericals. So next is energy stored in a capacitor is half CV square. And see, if two capacitors have opposite charges, means they will attract each other. If I want to find the force between them by which they attract, let us try to find it. Charge A plus Q, let us say area given है and gap भी given है. Capacitance भी figure out कर सकते हैं. Capacitance is A epsilon naught by D. So see, यहाँ पे electric field we know that is from positive charge to negative charge. From positive charge to negative charge. So force on, let us say this is plate 1, plate 2. Electric field पता है, force on plate 2 due to plate 1. That will be electric field multiplied by charge. अच्छा सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइन के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q. Okay. So electric field is Q by or sigma by epsilon naught. सिग्मा को लिख सकते हैं Q by A. Okay, but we should only write electric field due to plate 1. We should only write electric field due to plate 1. So यहाँ पे instead of writing E as sigma by epsilon naught, we should write sigma by 2 epsilon naught. So force will become Q square by 2A epsilon naught. So this is the force with which both the plates attract each other. Force with which two plates attract each other. There is another way to do this. That is, can calculate work done in separating the plates from distance 0 to distance t. So that work done will be force into the displacement. Right. As if you are working to separate the plates, so force will be constant because the electric field constant है, and you are doing the work because you are working against the force. अगर दोनों plates एक दूसरे को attract कर रहे हैं, you are holding one plate, so plate को hold करने के लिए force लगेगा, and the second plate you are pulling it. Second plate you are pulling it away. So you can write work done is force into D. Now the amount of work you do is stored in the stored as potential energy. So you can write this as Q into V.
by 2. This is the potential energy into the charge, Q into V by 2. What is potential energy? Potential energy is electric field into distance, because electric field is equal to V upon D. From here you can write V is equal to ED. That is FD. From here you get the force is equal to QE by 2, or electric field ki value, that is Q by A epsilon naught. Here we are writing the net electric field. Okay, so force will be Q square by 2A epsilon naught. You're getting the results for two different methods. Note this down. Okay, then we'll do a small discussion on energy. Let us say कि energy कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक, कहाँ जा रहा है. And before knowing that, see, I will tell you work done by battery. How to calculate work done by battery. Work done by battery is its EMF into the amount of charge it has transferred. कितना charge transferred किया multiplied by its EMF. Okay, so इस केस के लिए work done positive है, because positive plate is transferring plus Q charge. But if suppose due to some external mechanism, battery is taking charge Q. Battery is taking charge Q. Means this is the case of charging. No, this is the case of discharging. Discharging mein battery is transferring the charge. And in the case of charging, when the battery is charging, the work done is negative. This is minus QE. When the battery is discharging, the work done is Q times E. So remember this for all the future questions also. Work done by battery is potential times the charge transferred. Now we are going to analyze capacitors. Capacitor पे क्या होता है? So एक simple capacitor था, उसकी life बहुत अच्छी जा रही थी. And then we connected it to a battery, and पूरी life change हो गई because it got charged. So okay, capacitance था C, EMF है, call it E, और जैसे स्विच क्लोज करेंगे चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी. चार्जिंग स्टार्ट होगी तो इस पे चार्ज आएगा Q, जिसकी वैल्यू हो जाएगी C टाइम्स E. इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज. ओके, सो फर्स्ट विल कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. जो पहले कैलकुलेट किया हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, that is equal to half C E square. Half C E square. This is the energy stored by capacitor, जहाँ पे Q की वैल्यू है CE, और ये डेटा ऑलरेडी गिवन था, राइट इट इन ब्लैक. C और E गिवन था, Q हमने कैलकुलेट किया, Q इज C टाइम C स्विच क्लोज करने के बाद. This is energy stored in capacitor, but energy कहाँ से आया? Battery gave this energy to the capacitor. Okay, so battery was this rich guy who can give things to other people. So work done by battery
The battery is discharging, so it will do positive work. The amount of work will be charge multiplied by the EMF. Charge की value हम लिख सकते हैं C times E, because Q is C times E. So work done by battery is C times E square. There is this imbalance ना, बैटरी ने बहुत ज्यादा वर्क किया बट कैपेसिटर को थोड़ा ही मिला, बाकी एनर्जी किधर गया? What did you say? Resistance of wire. नहीं, वायर वाला अच्छा वाला यूज किया था, बहुत अच्छा वायर यूज किया था. रेजिस्टेंस 0 है वायर. Heat energy. हीट एनर्जी में गया. दैट इज करेक्ट. वर्क डन किया बैटरी ने बट पूरा एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, so it is lost as heat. तो एनर्जी कंजर्व करा है, तो वर्क डन बाय बैटरी goes to energy stored in capacitor plus energy lost. एनर्जी कंजर्व करा है तो ये तीनों चीजें आ रही हैं. यहाँ से we can calculate work done by battery is CE square, energy stored in capacitor is half CE square, and energy lost is, that is what we have to calculate. So यहाँ से आ जाएगा energy lost as heat will be half CE square. This is the amount of energy lost by the during the charging of the capacitor. Any questions? Okay. Now see, there is another term that is called energy density. So energy density is defined as energy stored per unit volume. ये quantity है जो electrostatics से पढ़ते हैं. I don't know for what reason. I know the reason. अभी जरूरत नहीं है. Energy stored per unit volume. Energy stored per unit volume. So energy density of capacitor we can calculate. Energy density of capacitor. So energy density of capacitor is equal to energy that is half CE square per unit volume. Volume कितना होगा कैपेसिटर का? That is area into the width D. So I can write this as A times D. So capacitance is A epsilon naught by D, and EMF can be written as V by D. No, EMF is voltage, no? Voltage is E times D. So this will be E square D square divided by D square divided by D, yeah. So this is E. And AD, no? AD is here. From here, if you calculate, we'll get half epsilon naught E square. This is energy per unit volume. So ऐसे लिख सकते हैं energy per unit volume. This is energy. This is volume. This is small u. Small u is energy density. अच्छा, ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला दोबारा आएगा. So remember this. Energy density is energy per unit volume, that is half epsilon naught E square.
and there is a lot of things hidden in this formula. I'll give you a hint: light or quantum physics. Anyways, nowadays everybody is about quantum physics. Apurav noted? Yes, sir. Okay. Okay, let's do some problems now. Let's solve some problems. One or two problems I will solve, and the rest will be on you. So this is a capacitor. So when switch is closed, then find first is equivalent capacitance. Second, charge on each capacitor, or first find total charge transferred by the battery. Total charge given by battery. Then find charge on each capacitor. Then find potential drop or potential difference across each capacitor. Then find energy stored in each capacitor. Then find total energy stored in the capacitor. Then find work done by battery. Then find heat or energy lost as heat. Then find, okay, there is nothing more to find. That's all. Start solving. यूनिट्स का ध्यान रखना है. माइक्रोफैरेड है तो एनर्जी जो माइक्रो जूल्स में आएगा. 6 microfarad, 3 microfarad, 2 microfarad. And in the second case, in the second question, potential is given as 10 volt. Solve this. And the second question के लिए भी 8 चीजें you have to find out. Solve this, take 10 minutes. I'll be back in 5 minutes. I'll be back in 1 minute. Don't turn off your cameras, I can see you. Apurav. Your internet connection is Sir, on. my internet, yes, sir. Okay. I hope you're not bored of staying at home. That. Okay. Okay, then solve this one. All the 8 parts are both questions.
Shall we discuss the first question? Rishit, first वाला हो गया सारा? Yes, sir. Okay. Okay, we'll discuss the first one. Okay, Nupur, will you tell me the answer for the first part? I hope I'm spelling your name right. Nine. Again, it's in series. For series, we have this formula. 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2. This is just the opposite of resistance. Okay. Calculate it and tell me the answer. Sir, I got one. 1. 1 भी नहीं आना चाहिए. I'm talking about the first one. Try again. Sir, two. 2. 2 is correct. C equivalent is 2 microfarad. Okay, once you have found the equivalent, many of the questions can be solved by taking the equivalent. Because I know what equivalent means. That is, in short, battery को कुछ पता न चले क्या change किया. So Nupur, tell me, what is the total charge given by the battery? Question number 2. Five. See, the equivalent is 2 microfarad and potential is 5 volt. So charge given by the battery is equivalent capacitance into the potential. Q is equal to CV. Equivalent capacitance is 2 microfarad. Potential is 5 volt. This is 10 microfarad into volt. Farad into volt is coulomb. So this is 10 micro coulomb. Understood? Okay. Nihar, third charge on each capacitor. Also. See, सीरीज में जो इक्विवेलेंट पे चार्ज होगा वही चार्ज इंडिविजुअल कैपेसिटर पे भी होगा. ओके, व्हाई? बिकॉज जितना चार्ज बैटरी यहां से लेगा that it should give on this capacitor, this plate, plus Q minus Q plus Q minus Q. So whenever you see capacitors in series, you'll just write plus Q minus Q plus Q minus Q. And that will be equal to capacitors charge on the capacitance, equivalent capacitance. Okay. Plus 10, right? So charge on 6 microfarad capacitor, yeah, plus 10. 10. 10 microcoulomb, and charge on 3 microfarad capacitor, that is also 10 microfarad, 10 microcoulomb. Let me write this as Q1 and Q2. So Q1 and Q2 is equal to Q.
Then Nihar, what is potential difference on each capacitor? V1 and V2. What is the formula for potential difference? एक ही तो फॉर्मूला है यार, Q is equal to CV. CB. Q upon C. Yes. Q upon C. Yes. Okay, then calculate the potential drop on the first capacitor. First one is 5 and the second one is 2, right? Q1 की वैल्यू 10 है Hmm. and capacitance की वैल्यू है 6. 6. Oh, okay, 6. It will be 5 by 3 5 volt. upon 3. And the other one is 10 upon 3. Yes. See, यहाँ पे माइक्रो और माइक्रो कैंसल आउट हो जाएगा. यूनिट्स का ध्यान रखना है, कौन सा माइक्रो में होगा, कौन सा एसआई यूनिट में होगा. दिस 5 by 3 वोल्ट एंड 10 by 3 वोल्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 वोल्ट आ रहा है क्या? नो, 5 वोल्ट आ रहा है क्या दोनों को ऐड किया तो? Yes. ओके, सो दोनों का जो सम होगा पोटेंशियल का, दैट शुड बी 5 वोल्ट. Then next question is energy stored in each capacitor. Apurav, tell me the answer. Energy stored in the first capacitor कितना होगा? सर QB स्क्वायर होता है ना? CV स्क्वायर होता है. एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर. या तो लिख सकते हैं Q into V by 2, या तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर by 2C. तीनों फॉर्मूला सर करेक्ट है. फिफ्थ से बात फिफ्थ के solve it right now. 6 into 5 by 3 का होल स्क्वायर. मैं सॉल्व कर देते हैं. हाफ कैपेसिटेंस इज पहले वाले का 6 माइक्रोफैरेड है. वोल्टेज है 5 by 3 इंटू 5 by 3. टू 25 by 3. सी फैरेड इंटू वोल्ट स्क्वायर इज जूल्स. ये आ जाएगा आंसर माइक्रो जूल. टेल मी द आंसर फॉर द सेकंड वन. कैलकुलेट करने के बाद, ऐसे नहीं बताना डायरेक्टली. सर 50 by 3. 50 by 3 is correct. See, one thing you observe, जिसका कैपेसिटेंस कम है उसमें एनर्जी ज्यादा है, राइट? 3 माइक्रोफैरेड चार्ज सेम स्टोर कर रहा है बट एनर्जी ज्यादा स्टोर कर रहा है. That was question number 5. Then question number 6 is total energy stored in the capacitor. Rishit? Total energy stored in the capacitor? $25. 25, या दोनों को ऐड कर दिया तो आ जाएगा सिंपली. That is 25 microjoules.
अच्छा डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट पे जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा उतना टोटल एनर्जी भी स्टोर्ड होगा. So equivalent पे charge is 2 microfarad and voltage is 5 volt. Sorry, capacitance is 2 microfarad. So equivalent, if you want to find half, capacitance is 2 microfarad, voltage is 5 square. So this will give you again 25 microjoules. So you can find it using both way. Capacitance पे जितना energy stored है, that will be total of the individual energy stored. Then question 7, work done by battery. Tell me work done by battery. Work done by battery is charge transferred by battery into the potential difference. Rishit? How much? 50. 5050, yeah. So charge transferred C, यहाँ पे चार्ज था, Q की वैल्यू 10 है, इक्विवेलेंट पे भी 10 माइक्रोकूलम है. So 10 microcoulomb into potential difference is 5 volt. So 50 microcoulomb volt, coulomb volt is joules, 50 microjoules. अच्छा एक और ट्रिक बताया था, work done by battery is double of the energy stored on the capacitor. Yeah, energy stored in the capacitor is half of the work done by battery. That trick also you can use to find work done by battery. Next, last one is energy lost as heat. Nupur, can you tell me the answer? Energy lost as heat. Think about it. Battery is doing work, capacitor is storing energy. But the amount of work done by battery is not equal to energy stored by the capacitor. So whatever remaining is, that is lost as heat. See here, heat lost will be work done by battery minus, we will use simple energy conservation. Battery is doing work, which is going into energy stored in capacitor as well as heat. That is simple energy, law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. So battery ka jo work done hai, that we are converting into potential energy of capacitor and heat. So from here, you can write heat is work done by battery minus U equivalent. Tell me this value. Can you repeat? Didn't hear clearly. Is 50? No, 50 minus. 50 minus, okay. Yes. U 50 minus 25. See, equivalent energy stored is 25 microjoules. So this is 25 microjoules. So half of the energy is lost as heat and half of the energy is stored in the capacitors. Okay. Any doubt in any part? This was a big question. This was a small question.
It is in that book. You haven't seen what big questions are. Okay, just kidding. This was a big question. So now time is for this. Shall I give this as homework?